حديث شريف نمبر 2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the best imam you is the one who learns and teaches the Quran. Hadith Sharif number 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الكلام كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the best speech is the name of Allah. Hadith Sharif number 4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تهابوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में अज़ीज़ें और देते रहो, इससे उम्मत पैदा होगी। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, keep giving and receiving gifts and love will be born. Hadith Sharif number 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي قريب من الله قريب من الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही आदमी अल्लाह ताला के करीब होता है और जन्नत के करीब होता है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a generous person is nearer to Allah and nearer to paradise. Hadith Sharif number 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the best deed in the sight of Allah is to pray early. صدق رسوله النبي الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام. माशाअल्लाह दाऊ सासुरवान दे रसूलुल्लाह मुबारक हदीस मुबारक मुतवक्कलवान दे देना बाद जो पंचवारी क्लास मासूमान से दावत पर को मोहम्मद अफजाल बिन ममरीज खान और मोहम्मद यहया तमाम अशमुले और बिल मोहम्मद साद दे बिन सबरजादा बिल मोहम्मद काशिफ मोहम्मद वली दिल बराज शमूल होता होता पेश अच्छे बच्चे संगरी खमाशुमान संगरी उनको तो सबदई अहलवान खामोशी तरदन जमात खान के देश का एक मंगरी तंगी जमात खान करा दी